पढ़िए। पैरा 3 मैडम। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि राम लखन आशा एक ने आरक्षी केन डोडर पर नाम क्या है आपका? मतलब कल्ला उर्फ नरोत्तम, कल्ला। कल्ला उर्फ नरोत्तम, हाँ। ये हस्बैंड है डिसीज के। पढ़िए। 5 इस आशय का दर्ज कराया कि उसने अपनी लड़की लक्ष्मी का विवाह 15 वर्ष पूर्व ग्राम टर्रा कला के बंसीधर के पुत्र नरोत्तम उर्फ कल्ला के साथ किया था। वह दिनांक 19/5/15 को अपने घर पर था। तभी उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री लक्ष्मी को उसके पति नरोत्तम ने घासलेट डालकर जला दिया है और उसे अस्पताल ले गए हैं। तब वह स्वयं तथा उसका पुत्र नरेश डोडर अस्पताल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मी से घटना के बारे में जानकारी ली। तब उसने बताया कि वह उस दिन सवेरे 7 बजे अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका देवर महेश, उसकी पत्नी रिंकी उसके घर पर आए और उसके साथ मिलकर उसकी सास शकुंतला ने बंटवारे को लेकर उसके पति नरोत्तम से झगड़ा शुरू कर दिया। और उसी दौरान उन तीनों ने नरोत्तम से कहा कि लड़ाई का कारण उसकी पत्नी लक्ष्मी है, इसको मार दो। इसी बात पर उसके पति नरोत्तम ने उसे जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसके शरीर में आग लगा दी, जिससे उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया। पहले इंसिडेंट में जो बर्न इंजरी आई उसी से डेथ हुई है डिसीज की। और प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 जो फादर है डिसीज का, वो ये कहता है कि चारों ने मिलकर के मारा था। 16 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। इंसिडेंट से पहले का कोई भी अभिलेख पे ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि विद इन 16 ईयर में कभी कोई प्रॉब्लम आई हो। कोई प्रीवियस एफआईआर या प्रीवियस कोई लड़ाई झगड़े वाली बात रिकॉर्ड पे नहीं है। 16 वर्ष बाद ये इंसिडेंट हुआ और सी डाइड। कन्विक्शन जो हुआ है माय लॉर्ड वो बेस्ड अपॉन डीडी एग्जिबिट P7 से हुआ है। प्रोसिक्यूशन केस ये है माय लॉर्ड, PW4 डिसीज का बेटा है और अपीलेंट का। उसने सबसे पहले टेलीफोनिकली बताया बंटी को, अपने मामा को, कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, चाचा चाची से झगड़ा हो रहा था। लेकिन कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया क्योंकि बंटी को एग्जामिन नहीं कराया। जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी थी सौरभ ने बंटी को, उसको कोर्ट में एग्जामिन नहीं कराया, तो उसके बेस पर वो कनेक्टिविटी नहीं हुई और कोर्ट ने सौरभ को डिसबिलीव किया। एज पर प्रोसिक्यूशन माय लॉर्ड, आई विटनेस जो है वो प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन कराए PW2, 3 एंड 6। PW2 हमारे फादर हैं, डिसीज के फादर इन लॉ, लेकिन वो इंजर्ड है इंसिडेंट में, उनको भी इंजुरीज आई हैं बचाने में। भाई आग लगाने जाओगे तो हाथ जल ही करेगा। नहीं मतलब वो ये नहीं है केस। PW2 तो मंदिर से आ रहे थे और जब वो आ रहे थे तो घर के बाद आग लगी हुई थी, उनको बचाया। मदर इन लॉ ने भी बचाया, फादर इन लॉ ने भी बचाया। डिसीज के साथ में दोनों एडमिट हुए हैं, ये डॉक्टर PW7 ने बताया। दोनों को इंजुरीज थी ये भी बताया। PW1 फादर ने भी बताया है, PW7 डॉक्टर ने भी बताया। PW2 ये कहता है कि जो इंसिडेंट हुआ वो घर के बाहर हुआ और जब हम आ रहे थे तो कचरे में से आग लग गई थी और आग लगने से जो है मेरी बहू को मैंने बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में उनकी बर्न इंजरी उसको आई है। 3 और 6 जो है हॉस्टाइल है माय लॉर्ड। काइंडली सी माय लॉर्ड एग्जामिनेशन ऑफ PW1 फादर। अरे वो तो पढ़ो डाइन डिक्लेरेशन। जी माय लॉर्ड, दैट इज P7। उस डाइन डिक्लेरेशन पे माय लॉर्ड अंगूठे का चिन्ह है, वो मैं बताऊंगा कि वो प्रूफ वो पोजीशन में नहीं थे अंगूठा लगाने के, ये डॉक्टर ने बताया है। सबसे पहले डॉक्टर तो सबसे ज्यादा खुराफाती है, यानी साइन ना कर पाना, अंगूठा लगा पाना, सब कुछ लेकर सक्षम हो। नहीं लेकिन माय लॉर्ड अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि पूरी बॉडी जल गई थी, उंगलियां भी जली हुई थी, तो फिर जली हुई उंगलियों से अंगूठा लगाना संभव नहीं था। मैं उस पर वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर करिए, एक बार डाइन डिक्लेरेशन देख सामने रखा। तो मैं क्या हुआ है, आग से जल गई हूँ। यह घटना कैसे हुई? 3 दिन से देवर महेश और मेरे पति नरोत्तम के द्वारा संपत्ति विवाद चल रहा था। मेरा देवर व देवरानी मेरे घर पर
इसको मारने आ गए थे, हमको मारने हमको आए। मारने आ गए थे। मेरी सास शकुंतला भी मुझे परेशान रखती है। देवर व पति के बीच विवाद को मैंने रोका तो मेरे पति ने मिट्टी का तेल मेरे ऊपर डालकर आग लगा दी। यह घटना कब और कहां पर हुई? आज सुबह 7 बजे के लगभग मेरे घर ग्राम टर्रा कला में हुआ है। तुम्हें और कुछ कहना है? मुझे मेरे परिवार वाले शकुंतला, देवर महेश, देवरानी रिंकी परेशान करते थे। मुझे कई बार घर से भी निकाला है। ये बाकी तीनों को माय लॉर्ड एक्विटल किया है। किसको? देवर को, देवरानी को और मदर इन लॉ को एक्विटल हो गया? एक्विटल। अच्छा, जी। तो बचा कौन फिर? ये पति? हस्बैंड अपीलेंट सोल, क्योंकि उन तीनों के लिए डीडी को माय लॉर्ड इसी डीडी को डिसबिलीव किया है ट्रायल कोर्ट ने। भाई से चल रहा है, और भी था। वो अलग चीज है। इसमें तो और तो कुछ है नहीं ना। क्रिमिनल अपील नंबर 613, यहाँ के क्या ना आपको? लॉर्डशिप, इसमें जैसा बताया डीडी है और इसके बाद फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है। जो आज जले कपड़े थे उसमें केरोसिन की स्मेल पाई। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ जी लॉर्डशिप। कि फ्रॉम seeing and dying declaration, there was no intention of premeditation of mind to kill her. It was a fight between two brothers यस over a dispute of partition. She became a victim because she came to square of the dispute. डीडी को देखने से ये 5 साल है, वो भी तो गए, 7 साल, 7 साल। 7 साल हो गए। Criminal Appeal 613 of 17. This is the second application under 439. This is the second application under 310 CRPC, seeking suspension of sentence. The appellant stands convicted for offences so and so and sentenced for so and so. As per prosecution story, the appellant is the husband of deceased. क्या नाम है उसका? Deceased Lakshmi. लक्ष्मी Married to him on 19. Married to him 15 years before the date of the occurrence of the incident. Full stop. It has been Ram Lakhan, PW1, lodged a complaint. Ram Lakhan, the father deceased, lodged a complaint, Exhibit P5, that इसको ऐसे लिखना, Ram Lakhan, father of the deceased, lodged a PW1, lodged a complaint at police station Dodar on 19/5/15 that of Exhibit P5 that his daughter, deceased daughter Lakshmi, was married to the present appellant 15 years ago. Huh? It is alleged while he was at home on 19/5/15, he was informed that the present appellant has killed Lakshmi by throwing kerosene oil and setting her ablaze. So she was rushed to the hospital with by him with his son Naresh. So she alleged that while on the previous day at about 7 she was cleaning the house, her brother-in-law Mahesh and his wife Rinki came to the house
along with mother-in-law Shakuntala. So they all three started quarreling with her husband, the appellant, over a dispute of partition. So while she intervened to set, sprinkled kerosene on her and set her ablaze. The same facts are reiterated by her in a dying declaration, Exhibit P7. Stop. On aforesaid allegations, evidence was laid. The Sessions Court convicted the appellant for offences so and so as aforesaid. Shri so and so and counsel for the appellant, while taking exception to the impugned judgment, submits that it is in fact not a case that of a dowry death or of any animus between the appellant and the deceased. Stop. On even as person's story, dispute was allegedly intervened for settling the dispute. So, therefore, कहाँ में कन्विक्शन है आपका? 302 में. As for want of premeditation of mind and intention, the instant case by no stretch of imagination shall fall within definition of 300, and therefore the conviction of 302 is wholly unwarranted. That apart, the very declaration on the declaration P7 based whereupon the appellant has been convicted, has not been given due credence in the matter of order in the case of co-accused Shakuntala, Naresh, क्या नाम है उसका? महेश एंड रिंकी. नरेश, महेश, रिंकी and Shakuntala. आ गया ना, we'll stop. Even otherwise, the appellant has already suffered jail incarceration for over 7 years with no criminal antecedents. Stop. Hence, praise for suspension. The appeal is August 17. There is no likelihood of early hearing of the appeal. Hence, praise for suspension of sentence. Per contrast, is so and so opposes the application supporting the order impugned with submission that appellant is there is a direct proximity of the appellant with the alleged incident of the homicidal death of the deceased. Appellant has sprinkled kerosene and set her ablaze. Therefore, no exception can be taken for the purpose to the judgment for the purposes of suspension of sentence. Shri B.D. Sharma, learned counsel for the objector, while adopting the submissions of the respondent state, further submits that as per the FSL report, there was a smell of kerosene from the clothes of the deceased, and therefore the factum of sprinkling of kerosene on the body of the deceased is conclusively proved. Besides, in terms of the exhibit P7, it's the appellant who has set her ablaze. Therefore, it's a clear case of murder. Hence, appellant is not entitled for suspension of sentence. Upon hearing counsel for the parties, though this court refrains from commenting upon the contentions advanced, however, regarding to the fact that appellant has already suffered jail incarceration for over 7 years, with no criminal incidents, appeal is of 2017. There is no likelihood of hearing of the appeal. Co-accused Mahesh, Rinku, and Shakuntala have already been extended the benefit of suspension of sentence. Hence, in the acquittal. I'm sorry.
uh, are acquitted, though found on the scene of occurrence of the incident, and being the and and central character in the genesis of the dispute, and at the central stage of the genesis of the dispute, have been acquitted. From with the view of the view that the appellant appellant deserves to be accordingly is extended benefit of suspension of sentence 2 lakh.